गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। लेट्स स्टार्ट आवर ऑब्जेक्टिव जनरल सीरीज 10,000 प्लस क्वेश्चन। और ये इंडियन पॉलिटी का पहला क्लास रहेगा, जो कि है इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और ये पहला क्वेश्चन है, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द रेगुलेट एंड अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजंस वाज मेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, which act was passed by the British Parliament to address the shortcoming of regulating act 1773 is also known as East India Company Act 1784। इसका आंसर रहेगा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ड्यूरिंग द रिजेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर पेविंग द वे फॉर शिपमेंट ऑफ ओपियम टू चाइना। आंसर चार्टर एक्ट 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? Answer Charter Act of 1813। Next question, which act through which one of the following were commercial activities of East India Company finally put to an end? Answer the Charter Act of 1833। Next question, which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration country? Charter Act of 1833। Next question, which of the following act of British had separate legislative from executive? Answer Charter Act of 1853। ये वीडियो अगर स्पीड लग रहा हो तो 0.75 में देख लेना, अगर जिसको स्लो लग रहा हो तो स्पीड करके 1.25 स्पीड में देख लेना। इसे पढ़ लेते हैं। ओपियम टू चाइना चार्टर एक्ट ऑफ 1793। उसके बाद सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एंड, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस वीडियो का पीडीएफ पढ़ने के लिए नीचे दिए गए द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय the regulating act of 1773। next question, which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? Answer Charter Act of 1813। next question, consider the following statement about the Charter Act of 1813। फर्स्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछेगी which of the following statement given above are correct? फर्स्ट ऑप्शन, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ये करेक्ट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय मोनोपोली। तो आंसर रहेगा पहला ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश हैड सेपरेट लेजिस्लेटिव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आंसर रहेगा द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज डन। आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब कौन से एक्ट की मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विथ सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are among the provisions of Act of 1858? First option, the administration of India and Indian territories was transferred to the Crown. Second, the rule of East India Company was abolished. Third option, the Governor General of India was to be known as Viceroy of India and the Secretary of State for India was also approached। ये तीनों से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following act was passed by British Parliament to increase the size of Legislative Council? Answer: Indian Council Act 1892. Next question: by which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? Answer: Indian Council Act 1892. Next question: which of the following act provided for communal representation in British India? Answer: Morley-Minto Reform 1909. Next question: the Indian legislature was made bicameral for the first time by इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी है. द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्शन इन इंडिया? आंसर: इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट introduced separate electorate for Muslim? Act of 1909, which also called as Morley-Minto Reform. Next question: the Act of 1909 was associated with introduction of separate electorate, that is Morley-Minto Reform. वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब करना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन: which of the following was the main features of the Government of India Act 1909? Introduction of separate election for Muslim, devolution of legislative authority, expansion, reconstruction of central and provincial legislature. आंसर होगा ऑल. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन. ये तो करेक्ट है. द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर द इंडिया बाय मोर. ये रॉन्ग है, तो आंसर होगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन: द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्शन इन इंडिया? Indian Council Act 1909. The Morley-Minto Reform was declared in the year 1909. Which of the following act introduced separate electorate for Muslim? Act of 1909, which was called Morley-Minto Reform. By which of the following act the system of dietary was introduced at the center? 1909, which was Montagu Chelmsford. Next question: in the federation established by the Government of India Act of 1935, residuary power is given to the Governor General. Next question: which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? Answer: Government of India Act 1935. Next question 46: which among the following was not a silent feature of Government of India Act 1935? Residuary subject were allocated to provincial legislature. One among the following was not a silent feature of Government of India Act 1935. Answer is residuary subject were allocated to provincial legislature. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following act was described by Jawaharlal Nehru as Charter of Slavery? Government of India Act 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following act received seats for women in legislature in accordance with the allocation of seat for different communities? Answer is the Government of India Act 1935. Which one among the following statement regarding Government of India Act 35 is not? The principle of communal electorate. And next question: the creation of federal court in India was advocated by which of the following act? 1935. Next question: which one of the following statement regarding the Government of India Act 1935 is not correct? Answer is the principle of communal electorate and weightage were further extended. Next question: communities. Next question
48. Government of India Act 1935 and the Constitution of India were both lengthy document. Reason: the Government of India Act 1935 was taken as model substantially incorporated in the Constitution of India. Both are correct. Next question: the Indian Independence Act was passed in July 1947. Next question: consider the following with reference to the principle of provision of Government of India 1935. First, establishment of an all India federation, provincial autonomy. Second, third, redistribution of provinces and creation of 2 new provinces. Which of those were embodied in the Government of India 1935? Option 1, 2, 3 all are correct under the Government of India Act 1935. Okay, next question. 49. The Indian Independence Act was passed in July 1947. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये वीडियो आपके सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए काइंडली वॉच एंड. ये वीडियो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लैग हो रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना. सेकेंड वीडियो से अच्छा हो जाएगा. इसके बाद आता है लास्ट पेज. ये पेज अगर समझ लिए तो समझ लो पूरा चैप्टर समझ लिए, क्योंकि सारा जिस्ट ही इसी लास्ट पेज में है. ओके, लेट्स स्टार्ट. कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट: रेगुलेटिंग एक्ट, पीड्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट. व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस एक्ट? ये 1, 2, 3, 4 होगा. रेगुलेटिंग एक्ट 73 में हुआ था, पीड्स इंडिया 1780 में, उसके बाद चार्टर एक्ट, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 51. ये भी मैच द फॉलोइंग है. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन. सेकेंड ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस डायरची व्हिच वाज मोंटेगू चेम्सफोर्ड. नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 52. ये मैच द फॉलोइंग है. बाइकैमरल सिस्टम, मोंटेगू चेम्सफोर्ड. लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. सेपरेट इलेक्टोरेट, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग. 53. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट, पार्लियामेंटो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 डायरची एट प्रोविंस, मोंटेगू चेम्सफोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. ये भी मैच द फॉलोइंग. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पार्लियामेंटो सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था इसमें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मोंटेगू चेम्सफोर्ड डायरची सेंटर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सिलेक्ट कमेटी. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये तो माउंटबेटन. तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 1. फिर से देख लीजिए. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पार्लियामेंटो, इंडिया एक्ट 1919 मोंटेगू चेम्सफोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सिलेक्ट कमेटी. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये माउंटबेटन प्लान. ठीक से याद कर लीजिए. 1908 में पार्लियामेंटो, 99 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड. पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना. PDF के लिए जॉइन अस टेलीग्राम. थैंक यू.